audit. But they might see it on a YouTube. मेरे भी कहीं जाना है तो मैं वाइफ को बोला था you drive the car. I will hear it on. So I think we are live on YouTube and welcome everyone. Very good morning and welcome to today's discussion. I'm extremely sorry for the delay. There was some internet issue I was facing, which I regularly use for my going live. So I have changed my room and now I'm using I'm calling, actually taking session from my not from my study room but from my personal room. So today we would be discussing various clauses of tax audit. I must admit, I would not be covering all the clauses of tax audit today. I feel we need in-depth discussion on every clause as far as possible. So we would be covering almost 50% of the clauses today and balance 50% on next Sunday, same time 11:30. We have already discussed clause 30C and clause 44, which is available on my YouTube channel in depth. However, if someone has any query on clause 44, we would be able to take the same towards the end of today's discussion. Now let me share my presentation. So I trust my slides are visible. Yes, sir, they are visible. Thank you, sir. So how I've designed is, we'll do a warm up. Why I'm saying warm up? Because I've already covered in another session, the applicability of tax audit. So today we would be doing the warm up of applicability of tax audit because there are certain clauses in Form 3CD which needs clarity on the section 44AB and 44AD. So we will start with section 44AB and we'll invest half an hour on and 44AB, AD, ADA, and then we will move on to the clauses. So this is my first slide, the requirement of audit for the profession, which is given in section 44AB, clause B, and also 44ADA. Read with 44AB and 44D and 44ADA. So if your client, if the SSC is involved in the profession, the first thing that we need to check, whether the gross receipt in the profession is more than 50 lakh or it is less than 50 lakh. So if the gross receipt are more than 50 lakh, then the tax audit is mandatory. However, if gross receipt are less than 50 lakh, in such a case, we need to check whether the person is involved in the specified profession or not. If he is involved in the specified profession, then we need to see what are the gross receipts. So let's say if the gross receipts are more than 50 lakhs, then audit is mandatory if you are in profession. However, if you are not, if your gross receipts are less than 50 lakh, and if you're not involved in the specified profession, then audit is not required. So what are specified professions? For example, CA, CS, doctors, architects, actors, these are all specified professions. But let's say if you are involved in specified profession and your gross receipts are less than 50 lakh, then we need to check whether you are an individual or partnership, other than LLP. If you are an individual or partnership other than LLP, and if you are declaring your profits less than 50%, in such a case, the audit becomes mandatory. So if you are a specified professionals, we will check what is the gross receipt from the specified profession. If it is less than 50 lakhs, plus you are individual or partnership or other than LLP, then we'll check how much profit one is declaring. If the profit declares are more than 50%, then tax audit is not applicable.
However, if profit declares are less than 50%, then we'll check whether the total income. Now, see, from here, we were talking about the profit. Now we have moved on to total income. And if the total income of such SSE is more than amount chargeable to tax, then audit becomes mandatory. Otherwise, audit again is not mandatory. So cut it short, again, for the purpose of revision, you need to check whether what is the turnover. If turnover is more than 50 lakh, then audit is mandatory, whether you are into specified profession or you are not into specified profession, irrespective of that. If you are into specified profession, if you are an individual partnership firm, then you have an option to declare gross profit to the tune of 50% of your gross receipts. And if you are doing that, then tax audit is not applicable on you. But if you are declaring profit less than 50% of your gross receipt plus your total income, now we will take total income means other income also. If your total income is more than the amount chargeable to tax, then you need to get your audit done. Any query on this slide? गौरव जी, ग्रॉस रिसीट के ऊपर काफी कंफ्यूजन है, इसमें जीएसटी लेना है कि नहीं लेना है, वैट लेना है कि नहीं लेना, थोड़ा इस पे क्लैरिटी कर। Yes, sir. We will do a specific discussion on gross receipt. We have a slide, so we'll do the discussion on gross receipt. So broadly, तो आपने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. So institute says, whatever is your normal accounting practice, उसके हिसाब से we need to compute your gross receipts. So as far as GST is concerned, अगर आप GST की अपने इनवॉइस में सेपरेटली उसको दिखाते हैं, आप उसकी अकाउंटिंग सेपरेटली करते हैं, एक डिफरेंट अकाउंट में ले जाते हैं और उसी अकाउंट से आप गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, मतलब नॉट फ्रॉम द बैंक अकाउंट बट जो आपने बुक्स मेंटेन कर रखी है, then we will not include GST in your gross receipts. However, if you are showing your turnover regularly by including the GST, not breaking it separately, not crediting in separate account, not debiting through separate account, then GST would be included in gross receipts. Now, secondly, the idea is that it is from your profession. When we are talking about the profession, so we are talking about the profession. Let's say if somebody is involved, is a doctor, or if I'm a chartered accountant, then question comes, what is the gross receipt from my profession, from the profession of CA? Let's say in addition to being a chartered accountant and doing the practice, I have also done some investments which I have sold during the year. Now the receipt from such investment is not the receipt from the profession. So now, as far as this gross receipt are concerned, as far as specified profession is concerned, so we'll see what is the gross receipt from the profession which is specified and not any other receipt. Similarly, if I go to the first threshold, which is gross receipt in the profession. Now, gross receipt in the profession, and once we will go to 44AB, the language of 44AB clause A is different from language of 44AB clause B. Now, if your gross receipt in the profession is 50 lakh, again the question comes whether I should include the GST or should I not include the GST. So Institute has given very clear guidance that what is the accounting practice followed by your client, what is the accounting practice followed by the SSC. If SSC normally includes GST in its turnover, then you must consider GST for the purpose of computing the thresholds. But if the SSC is not including GST in its turnover, then one should not include. Also, we need to see what is the accounting treatment. So if accounting treatment is, that there is a separate GST account, you are crediting GST received in that account, you are debiting GST paid to the government from that account, then GST is certainly not your turnover. You are admitting yourself that it is the liability which you need to pay to the government. But let's say there is a reimbursement, which I have billed to the client, which forms part of my invoice and I'm booking it as a turnover.
then the reimbursement amount received would become the part of gross receipts. In that case, that expense I incurred will be into my profit and loss account, income and expenditure account. Absolutely. One more question, which many professional will have, that in the case of professionals, the partner's salary is to be calculated after arriving at the 50%. Yes, sir. ठीक है ना? तो अब जो 50% profit है, that is before the salary or after the salary of the partners? Well, salary would not be allowed from the 50% of the profit. Why not? Law तो ये कहता है, because in professional section 28 to 38 expenses are allowed to have deemed to have been allowed, unlike the partnership or business. इस पर थोड़ा सा डिफरेंस है ना? आइए सर, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. So it says notwithstanding anything contained in section 28 to 43C. So it start with notwithstanding anything contained in section 28 to 43C. So 4488 subsection 1. So in my humble view, once you have declared 50% profit, we would admit that the salary paid to the partners has already been included. ये पढ़ रहे हो आप business के लिए? क्वेश्चन का जरा पढ़िए. नहीं, मैं 44 ADA पढ़ रहा हूँ सर. 44 ADA subsection 1. This is very clearly given in subsection 1 of 44 ADA. So but expenses deemed to have been allowed to have 38 तक के है. एक दफे वो भी देख लो. Subsection 2, any deduction allowable under provision of section 30, 38 to 38 shall for the purpose of subsection 1 be deemed to have been already given full effect. Yes. And no further deduction under those sections shall be allowed. Allowed. इसका मतलब है 38 के beyond जो है उनकी allow होगी, which is remuneration to partners and interest. I think, sir, I need to, you raised this point earlier also, and I hold the same view. So let me do some more research on it and then again get back to you. Because sir, we are taking claim and the department is allowing it. Okay. 50% के बाद हम partners का remuneration ले रहे हैं and the department is allowing. Because that's a part of, because unlike in business, in profession, it is only section 28 to 38. All expenses, all provisions and all deductions are deemed to have been allowed from 28 to 38. Yes, the clause begins with the notwithstanding anything and up to 43. But in the case of profits, it is only section 28 to 30. आप इस पे प्लीज एक बार पढ़ के क्लैरिफाई दोबारा कर दीजिएगा. Correct. Thank you. So Preeti, I'm sorry for the interruption. No issue, sir. Most welcome. Preeti is saying, what is the best way, include or exclude GST? Preeti, there is no best way. It depends upon the accounting practice of your client. So what is the accounting practice he is following? So if you after going through the books, you can see that there is a separate GST account which he has maintained, and the receipts are credited in that account, and the payments are debited from that account. Then you can very well take a position that we should not include GST in the turnover. Naveen is asking which rules should be referred for. Rule 6F is there, Naveen, which you can refer for the specified professions. गौरव जी, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन प्रोफेशनल्स के माइंड में ये भी है कि बुक्स मेंटेन नहीं करनी. Department may not ask for the books, but they can always ask you to prove the professional receipts or sales. वो तो है ही सर. हाँ, तो इसलिए जो लोगों के दिमाग में है ना कि बुक्स रखने की जरूरत ही नहीं है, because the law also says the profit 50% or 6%, 8% or other higher as declared by the assessee. वो higher तो तभी declare करोगे अगर आपके पास बुक्स होंगी तो. नहीं सर, दो चीजें हैं. लॉ ये कहता है कि अगर आप 50% वाला ऑप्ट नहीं करते तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और आपको ऑडिट भी कराना है. बट लॉ ये नहीं कहता कि आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी. ठीक है. सर्टेनली जिन चीजों पे हम क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी टर्नओवर है, मेरी ग्रॉस रिसीप्ट है, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी. the stand which you are taking in front in the department or in the court, तो वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए. मतलब आप पे जी मैं अपनी रिसीप्ट ही प्रूव नहीं करूंगा,
then how the law will apply? At least one needs to prove that this is my receipt. These are my receipts. If you will prove that these are your receipts, then you have an option to go for a 50% or a higher amount. Then you are not required to get your books audited. But if you are going below 50, then department will come back and say कि यार आप मुझे सारे अपने खर्चे दिखाओ, अपना revenue proper दिखाओ, audit कराओ और audit file करो. So this is my understanding. Exactly. Thank you, sir. गौरव जी, मैं ना आप उस पे अपने मोबाइल पे जा रहा हूँ, यह बंद करूँगा. ठीक है. Thank you. Thank you. Now, the second requirement comes under the audit if the assessee is involved in 44 AE, AB or triple B business, and if it declares profit less than the deemed profit which are given in the section. If one is declaring profit less than the deemed profit, then audit is required. Otherwise, audit is not required. Now, let's come to again a very important section, section 44 AB. Now we'll discuss about the business. We have discussed about the profession. We have discussed about the presumptive taxation with regard to certain business. Now we are discussing 44 AB for journal business. So it says every person carrying on business shall, if his total sales, turnover or gross receipt as the case may be, in business exceeds 1 crore rupee in any previous year. So before we come down to the provision, let's understand for this provision, this main clause. So if your turnover, let's say if you are involved in 3 businesses, then we need to see the total of the turnover of all those businesses. And if your total turnover of the business is more than 1 crore, then we will, the 44 AB says then audit would be applicable. Now, as far as turnover is concerned, what is the meaning of turnover? It says turnover, total sales, turnover or gross receipt as the case may be in business. Now, if you're, let's say, if you have taken an insurance of stock and your inventory, and if there is a fire and the stock or the inventory gets destroyed, and the insurance company gives you the claim amounting to rupees 50 lakh. So question to you is, whether you will include this insurance amount which you have received as a claim in your turnover or not. Any views on the same? Whether one would include the insurance claim received in the turnover or not? You can share your answer in the chat box. Okay, so Naveen is saying no. So what is the view of the friends watching it on YouTube, whether you will include it or not in the turnover? Vijesh is saying no. Manish is saying no. And let's say there is a insurance, insurance which covers your fixed assets, insurance which covers your stock, and insurance which covers your building. And there is a fire. So whether you will going to include insurance amount received in your turnover or gross receipts from the business or not. So answer is yes. Because the stock is your, is your business. You are dealing in stock. You are dealing in inventory. Now the receipt which is arising from the business. So it should be included in your turnover when you are computing the 1 crore threshold. But if it is related to capital assets, then certainly we are not required to include that amount while computing the threshold of 1 crore. Now it further says, provided that in case of a person whose aggregate of all amount received, including amount received for sales, turnover or gross received during the previous year in cash, does not exceed 5% of the said amount, an aggregate of all amount including amount incurred for expenditure in cash. Let's say during the year, you have received a loan also, and there are certain cash sales. Your turnover is, let's say,
1.5 crores. Your sales is 1.5 crore, and 5% of 1.5 crore would be 7.5 lakhs. Let's say your turnover during the year is 1.5 crore and your cash sales are 8 lakh. However, your bank loan, which you have taken, is, let's say, 2 crores. So my question to you is, when you would be computing this 5% threshold, जब आप ये 5% threshold निकालेंगे, तो आप 7.5 divided by 1.5 करेंगे या 7.5 divided by 3.5 करेंगे? So whether in receipts, aggregate of all amount received, we need to include the bank loan taken or not. What is the view of the house, whether we would include it or not? So whether the bank loan taken should be included in the turnover, not turnover, aggregate of all amount received or not. So answer is no. Naveen is saying no. Any other answer? Manish ji is saying to be included. On YouTube, Rahul is saying yes, to be included. Brijesh is saying to be included. Certainly it needs to be included. So those who are saying no, I think they must read the law again very carefully. It says aggregate of all amounts received, including amount received for sales. It does not say aggregate of all sales amount. It says aggregate of all amount received, including amount received for sales. So there is certain addition, so more than sales. So whatever my total receipts, what are my total payments, whether they are capital payments or revenue payments or capital receipt or revenue receipt, should be included. Absolutely, Poonam ji. Poonam Mendi Ratta ji has joined us on a YouTube. The consolidated amount of insurance claim needs to be divided or needs to be bifurcated in stock and the capital asset. The amount pertaining to stock can be added to while computing the threshold of 1 crore. Now, if the receipts, if your electronic payments are less than 5%, as we discussed, then in such case, instead of 1 crore, we would be reading it as a 10 crore. So the answer, so if I put it simple, so if your turnover or gross receipt or total sales is more than 10 crore, then certainly audit is applicable on you. And if it is less than 10 crore, then we need to check certain more thresholds, which are what is your electronic payment, whether it is 5% electronic payment or receipt, whether it is 5% or less. And if it is 5%, it is less than 5%, then till 10 crore, one need not get audit done. But if it is more than 5%, then the audit needs to be get done, even if when the turnover is more than 1 crore. For less than 1 crore, 44AB clause A says audit is not required. So problem comes when we go and see 44AD, that if the SSC is into the business and 44AD talks about the turnover of 2 crores. So the position would become, if your turnover is 50 lakh, should I go to clause A of 44AB or should I go to clause E of 44AB? But before I move on to 44AD, there are some important provisions which are given in 44AB. It further says, get his account of such previous year audited by an accountant before the specified date and furnished by that date the report of such audit report in the prescribed form, duly signed and verified. So question comes, till when you can sign the audit report? Till when you can sign the audit report of the SSC? Can you sign the audit report of the SSC on 30th September? Can you sign the audit report of the SSC on 30th September?
Please share your view. My question is very simple. Can you sign the audit report of a client on whom TP is not applicable, transfer pricing is not applicable on 30th September? Preeti is saying yes. Any other answer? Naveen is saying yes. Any other answer? So any other answer from my friends watching on the YouTube? Can you sign the audit report on 30th September? So let's read it again. It says, get his accounts of such previous year audited by an accountant before the specified date. So what is specified date? 1 month before the filing of return. Return date is 31st October. So the specified date becomes 30th September. So you need the client needs to get audited done before 30th September. So if you are signing the audit report, then to be compliant with the law, you must sign the audit report before 30th September. The 30th September is the deadline to submit the report to the department. So see, if you read the language, it says, get his accounts of such previous year audited by an accountant before the specified date. Get the account audited by an accountant before the specified date and furnish by that date the report of such audit report. तो 30th September तक तो सबमिट करना है, उससे पहले ऑडिट करा लेनी है. Let's move ahead. Provided that this section shall not apply to person who declares profit and gains for the previous year in accordance with the provision of subsection 1. अगर आप 44 AD के subsection 1 के हिसाब से देते हैं तो आपको ये section आप पे नहीं लगेगा. Provided further that this section shall not apply to person who derives income in the nature of section 44B and 44BBA, that is airline and shipping companies. उन पे भी नहीं लग रहा. It further says every person, provided that in a case where such person is required by or under any other law to get his account audited, it shall be sufficient compliance. अब मान लीजिए कंपनी पे हमें कह रहे हैं कि हमें ऑडिट कराना है, टैक्स ऑडिट लगता है, बट आपको कोई सेपरेट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. इट सेज इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस. कंपनी हो गई, LLPs हो गई, with the provision of section if such person gets the account of such business or profession audited under such law before the specified date. तो अगर आप कंपनी का कर रहे हैं या LLP का कर रहे हैं तो आपको कोई सेपरेट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. जो कंपनी लॉ या LLP लॉ में आपने ऑडिट कर दिया, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट ऑडिट अंडर सेक्शन 44A. एनी क्वेरी टिल नाउ? बट गौरव जी, इसकी जो है ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो फिर भी फाइल करनी है. Yes sir. So there are, so we have statement of facts. Basically form 3CD is the statement of fact. तो मुझे सेपरेटली ऑडिट नहीं कराना, बट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है, इफ एप्लीकेबल आई नीड टू फाइल. नाउ लेट्स गो टू 44 AD, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस. अगेन इट इज अ प्रिजम्पटिव सेक्शन. So I am starting with subsection 6 instead of subsection 1 because we generally start with subsection 1. I thought let me start with subsection 6 because subsection 1 पे अटक जाते हैं, 6 तक पहुंच ही नहीं पाते, तो 6 से स्टार्ट करते हैं. It says the provision of this section, notwithstanding anything contained in the foregoing provision, shall not apply to a person carrying on profession as referred to in subsection 1 of section 44A. तो अगर आपका कोई क्लाइंट है और वो नोटिफाइड प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और वो बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, तो उस पे 44 AD नहीं लगेगा. अगर वो पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, अब वो 44 AD लेगा नहीं लेगा वो उसकी इच्छा है, बट इफ इज इन्वॉल्व्ड इन द स्पेसिफाइड प्रोफेशन, इन सच अ केस ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर 44 AD. कई बार हम एग्जांपल देते हैं, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का वो मेडिसिन का काउंटर भी है, वो मेडिसिन बेच रहा है, मेडिसिन उसका बिजनेस है, डॉक्टरी उसका प्रोफेशन है, तो वो डॉक्टरी पे वो ले लेगा और बिजनेस पे 44 AD ले लेगा. नहीं, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो तो 44 AD आपके लिए है ही नहीं. ये द पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन. नाउ द वर्ड इज अ पर्सन, सो यू मे बी हैविंग लेट्स से 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स. आपके 2 बिजनेसेस हैं और आप आर्किटेक्ट भी हैं. लेट्स से आप आर्किटेक्ट हैं और आप क्या करते हो, कस्टमर को जरूरत होती है तो आप उसको माल भी सप्लाई करा देते हो, है ना. अब आप कहते हो जी जो मैं मटेरियल सप्लाई करा रहा हूँ उस पर मैं 44 AD लेना चाह रहा हूँ,
और जो मेरा आर्किटेक्ट का इनकम है उस पे मैं मेरी ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा है, आई कैन नॉट क्लेम 4480. सो द क्वेश्चन कम्स ऑन द टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस and not the profession. Can you claim the 4480? Answer is no, you cannot. A person earning income in the nature of commission or brokerage. So even if your commission income is, let's say, let's say your total turnover is 1.5 crore of the business, and your commission income is meagerly 1 lakh. So can you claim 4480? Answer is no, you cannot. You cannot claim 4480 for your business अगर आपकी कमीशन इनकम 1 लाख है. कई बार हम P&L में देखते हैं यार चलो इसकी कमीशन इनकम आ रही है, उसका टर्नओवर 1.7 लाख 5 लाख है, कमीशन से 2 लाख रुपए है और एडी में हमने उसको ऑफर कर दिया. नो, इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑन द पर्सन कैरिंग अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन. सो if you are a specified professional, if you are carrying a person carrying on a profession as referred to in subsection 1, or if you are earning a commission income, brokerage, or you are into agency business, then you cannot claim 4480 for rest of your business. Eligible SSC means individual HUF partnership firm who is resident but not LLP. तो आपका client अगर individual HUF partnership firm है तभी we will talk about 4480, otherwise we will not talk about 4480. And then he should not claim any profit link deduction, 10A, 10AA, 10B, 10BA, or deduction under heading C, part C of chapter 6A. Any question till now? So what it says, 4480, notwithstanding anything in the contrary contained to section 28 to 43C, in the case of an eligible business eligible SSC engaged in eligible business, a sum equal to 8% or 6%, जो भी है अगर आप उतना शो करेंगे तो कोई ऑडिट नहीं है, अगर उससे कम शो करेंगे तो ऑडिट आप पे आ सकता है. Subsection 4, what it says? गौरव जी एक मिनट, अगर वो सेक्शन 10 या 10A की डिडक्शन लेता है या सेक्शन 32 की, तो उसकी तो वैसे भी उसको ऑडिट करवाना ही है. मैंने तो आपको पहले ही कहा था, हमारी माइक जाती है ना उस हिसाब से. बिल्कुल सर, बिल्कुल. रास्ते में हम लोग 15 मिनट में तो सेक्शन 10 की डिडक्शन से 4480 में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सर 4480 में लिखा है अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो यू वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एलिजिबल एसएससी. राइट, वो से ऑडिट तो वैसे ही कराने पर किसी और उसमें ऑडिट हो रहा है तो और उसका प्रॉफिट अगर कम भी आ रहा है तो वो तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा उसको. नहीं सर, एक तो ऑडिट उसकी बिजनेस का हो गया, सो एसएससी कैन हैव अ मल्टीपल बिजनेस. ठीक है. So if the SSC is having a multiple business and for one unit he is claiming, let's say chapter 6 deduction under 6A, तो भी उसको entirely he would not be considered as eligible SSC. Right. That's what I was saying. कि ऑडिट तो कराना ही पड़ना उसको तो. हाँ. पूनम जी पूछते हैं, can commission be shown under head income from other sources to claim 4480? In my humble opinion, answer is no, Poonam ji, we should not do this. अब एक सबसेक्शन 4 पे बड़ा इशू आता है. कई बार हम डिस्कस करते हैं एंड आई हैव माय ओन वे ऑफ रीडिंग द सबसेक्शन एंड देयर आर people who are in line with my view and there are professionals who are not in line with my view, but I will share both school of thoughts with you. Sometimes we assume 4480 is automatic in the sense कि यार मुझे तो प्रॉफिट जो है डिक्लेयर करना ही है 6 या 8%, even if my turnover is less than 1 crore, and if I will not do, then I must get my books audited. So I hold a different view. If you go to subsection 4, it says where an eligible SSC declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such provision, previous year not in accordance with the provision of section 1. ये दो कंडीशन आपको साइमल्टेनियसली फुलफिल करने को कहता है. पहली कंडीशन ये कि आपने किसी प्रीवियस ईयर में 4480 ऑप्ट कराओ. अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर में 4480 ऑप्ट कराए और आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक किसी भी ईयर में अगर आप 4480 ऑप्ट नहीं करेंगे
then in such case you need to get your books get audited, और वो आपको सिलसिला ऑडिट कराने का नेक्स्ट 5 years तक फॉलो करना पड़ेगा. तो whenever you will take, let's say आज मैं ऑडिट करा रहा हूं, तो next 5 years तक I cannot take exit. But if I will take exit, let's say if I take exit in the 3rd year, then मुझे 3rd year का भी ऑडिट कराना पड़ेगा, plus 3 + 5 4 years का भी मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा. So this is what the loss is. But let's say you are in the 1st year, आपने 1st year में 44 AD ऑप्ट ही नहीं करा, तो क्या आप पे सबसेक्शन 4 लगेगा? टू माय हम्बल व्यू, सबसेक्शन 4 वुड नॉट बी एप्लीकेबल, एंड बीइंग सबसेक्शन 4 इज नॉट एप्लीकेबल, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कभी 44 AD ऑप्ट नहीं करा. अब पिछले 4-5 साल से मैंने बिजनेस शुरू करा है और मेरी टर्नओवर 25 लाख है, बट मैंने कभी ऑडिट ही नहीं कराया, मैंने कभी परसेंटेज मतलब आई हैव नॉट नेवर ऑप्टेड फॉर 44 AD. तो क्या होगा? फर्स्ट ईयर में मान लीजिए मेरी टर्नओवर 25 लाख थी, आई हैव डिक्लेयर्ड प्रॉफिट ऑफ 2%. सेकंड ईयर में मेरी टर्नओवर 50 लाख है, आई हैव डिक्लेयर्ड प्रॉफिट ऑफ 4%. डू आई नीड टू गेट द ऑडिट डन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर? टू माय हम्बल व्यू द आंसर इज नो, बिकॉज मैंने पिछले सालों में 44 AD क्लेम ही नहीं किया. Now subsection 5 says, notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an eligible assessee to whom the provision of subsection 4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and get them audited. तो सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि यार ऑडिट कराना है, अगर मैंने फॉलो नहीं करा, मैंने क्लेम किया है और मैं इस बार बाहर हो रहा हूँ. द पॉइंट इज योर टोटल इनकम शुड बी मोर देन the sum which is chargeable to tax, and if it is more than sum chargeable to tax, then only we'll say you need to get your accounts audited. Any query till here? Any query guys? गौरव जी, एक कंफ्यूजन प्रोफेशनल के माइंड में ये भी है कि मिनिमम चार्जेबल टैक्स 5 लाख है कि 2.5 लाख है? सर ये ना असेसी टू असेसी डिपेंड करेगा. अभी छोड़ देते हैं. अच्छा ठीक है. हर क्लाइंट का अपना अपना वो है, तो जिसका जो लिमिट उस पे लगेगी वो लिमिट लगा दें. एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेरी है, अगर मान लो मैं 3 साल से 44 AD ले रहा था और 4th ईयर्स में आके मैं 5% प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ऑडिट होगा नहीं? सॉरी नवीन, दोबारा बताना. सर मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो 3 साल से 44 AD क्लेम कर रहे थे, 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और 4th ईयर में आके मेरी टर्नओवर 50 लाख है, बट मैं 5% प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूँ, मतलब 6% और 8% से नीचे, तो क्या मुझे ऑडिट करवाना होगा उस केस में? आपको बिल्कुल कराना पड़ेगा. ओके सर. क्योंकि आपकी देखो टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, और आप सबसेक्शन 4 को भी सेटिस्फाई कर रहे हो कि पिछले सालों में आपने ऑडिट कराया है, ठीक है, और आप एग्जिट ले रहे हो, तो टू माय हम्बल व्यू यू नीड टू गेट योर ऑडिट डन. थैंक यू सर. फिर अगले 5 साल भी कराना पड़ेगा ऑडिट? बिल्कुल अगले 5 साल कॉन्टिन्यूसली कराना पड़ेगा. हाँ. एनी अदर क्वेरी? ओके, सो लेट मी नाउ मूव अहेड. So this is what is given in 44 AB. Carrying on business shall if the provision of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax. The language which is given in 44 AD, the same language is given in 44 AB. Now I'm coming to clause by clause discussion of form 3 CDP. We will be covering few clauses in today's discussion and balance in the on next Sunday. So clause 1, name of the SSC. We all know, I think name of the SSC is pretty simple. The only point which we need to remember is if there is a change in the name of the SSC. So if there is a change in the name of the SSC which has happened during the year, so we need to put name at the end. However, we can always mention कि मेरा पुराना नाम क्या था. And if there is a change after the balance sheet date, that is after 31st March, then उस केस में आप जो 31st March को नाम था वही डालेंगे, बट ये मेंशन कर सकते हैं कि the new name of the SSC is
whatever the new name is coming, that needs to be mentioned. गौरव जी, एक थोड़ी कंफ्यूजन और माइंड में है कि जो एक पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं तो पैन तो चेंज होता नहीं है उसमें। हाँ जी। तो उस स्टेज में व्हाट इज टू बी डन? मतलब सॉरी, नेम में आगे एलएलपी लगेगा सिर्फ। तो वो एलएलपी डालेंगे सर, और अपने जो 3C है 3CB है वहां पे हम डिस्क्लोजर दे सकते हैं कि द कंपनी वाज अर्लियर जो है वो क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म थी एंड नाउ इट इज एलएलपी। ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि पैन इज चेंज्ड, पैन चेंज हो जाता है क्या सर पार्टनरशिप से एलएलपी में? सो ब्रिजेश जी की अनदर क्वेरी इन कंटिन्यूएशन टू नवीन क्वेरी, then what is this entity of 1 crore in 44 AB? सर 44 AB में जो सेंटिटी है लेस देन 1 करोड़ वाली वो बिल्कुल ठीक है, बट वंस यू हैव ऑप्टेड फॉर 44 AD and 44 AD is more specific, so I feel 44 AD will overrule the generic provision. 44 AB is a generic provision, 44 AB clause A, whereas 44 clause AB clause E is a specific provision. So if you have entered into 44 AD and you have opted for 44 AD, so once you have opted for 44 AD, जो eligible SSC की definition है, it nowhere says that your turnover should be more than 1 crore. So once you have entered, once you have become eligible SSC, once you have opted for 44 AD, to my mind, then subsection 4 will going to have the overriding impact on 44 AB clause A. Now the address, क्लॉज 2 में आप एड्रेस वही डालें जो इनकम टैक्स पोर्टल पे एसएससी ने दे रखा है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वही डालें। कंपनीज के केस में जो आरओसी में एड्रेस है वो हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डालना है। Then permanent account number we all know. Now as far as clause 4 is concerned, so we have a guidance note from the institute that we must take management representation letter from the SSC, और उससे हम पूछें कि आप कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस में रजिस्टर्ड हैं, उनके एड्रेस क्या है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेशन क्या है, और वो रजिस्ट्रेशन या आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। एक बार आप जब अपने एसएससी से क्लाइंट से डिटेल ले लेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेंगे, आप फिर उस जो डिपार्टमेंट ने उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इशू करे हुए हैं उससे आप उनको क्रॉस वेरीफाई करिए। तो जितने, अगर आपके क्लाइंट के 10 रजिस्ट्रेशन है या 15 रजिस्ट्रेशन है, जितने भी रजिस्ट्रेशन है, वी नीड टू मेंशन ऑल द रजिस्ट्रेशंस इंक्लूडिंग the registration, the import export code given by the custom authority, that also needs to be mentioned under clause 4. Now question आता है, what if auditor prima facie is of the opinion that any indirect tax law is applicable on the business profession of the SSC, but the SSC has not registered under the said law? Then उस केस में guidance note कहता है, then if you feel that first of all it is not योर केस कि आप उसको इन डेप्थ डिस्कस करें कि उसमें उसको रजिस्टर कराना था या नहीं कराना था, बट अगर आपको लगता है कराना था तो आप उसको फॉर्म 3C या 3CB में प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दीजिए। देन वी हैव क्लॉज 5, 6 एंड 7 व्हिच इज ऑन स्टेटस एंड प्रीवियस ईयर। सर सॉरी, एक चीज पूछनी थी, क्लॉज 4 में प्रोफेशनल टैक्स भी इंक्लूड होता है क्या? अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो बिल्कुल इंक्लूड होगा। ओके। Now in clause 8, pretty simple, indicate the relevant clause of section 44 AB. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था और हमने उसका टैक्स ऑडिट किया, बट यू नो वो दैट गेट ऑडिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो आप इसमें से कौन सा क्लॉज ऑप्ट करेंगे? विच क्लॉज यू विल चूज? इफ यू आर डूइंग द टैक्स ऑडिट ऑफ अ कंपनी, विच क्लॉज यू विल चूज? You can put your answer in the chat box. Clause 44 ABA, ABB, ABC, ABD, ABE, audit under any other law, provision to clause 44 ABA.
which provision you will choose. If you're doing the audit of the company, which provision you will choose? Please chat box में आंसर डालिए. So in such a case, we will choose audit under any other law, that is third proviso to section 44 AB. नहीं मनीष जी, क्लॉज ए चूज नहीं करेंगे. कंपनीज के केस में इट इज ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, दैट इज थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 44 AB. कंपनीज हैं, LLP हैं, उनमें हमें यही चूज करना है. Two questions. Let's say question number 1, Tuition Company Private Limited is an Indian company with a turnover of 15 crore. Which clause of 44 AB is applicable? Let's say Tuition Company Private Limited. It's the purpose is basically it teaches, let's say, the students of IIT or IIMs. It gives the tuition. So there are various professionals passed from IIT or IIMs. They have opened a coaching center. And for the sake of convenience, they are using it in a company form. So they have a company. Now the question comes, their turnover is more than 15 crore. Which clause of 44 AB is applicable on them? So slides are in front of you. Which clause of 44 AB is applicable on them? कौन सा 44 AB A या 44 AB B? Naveen is writing B, that is gross receipt from the profession. Any other answer? Naveen bhai, मेरा क्वेश्चन ये है कि can a company do a profession? Can a company do a profession? No sir, profession company तो नहीं. तो फिर बी कैसे क्लॉज चूज करोगे? वेरी करेक्ट. यूट्यूब पे राहुल धवन ने आंसर दिया है, ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ. एब्सोल्युटली, कंपनी कैन नॉट डू अ प्रोफेशन एंड वी हैव सीन, पहले हमने डिस्कस करा था ऑडिट अंडर एनी अदर प्रोफेशन चूज करेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A partnership firm of architects having turnover of 45 lakh excluding GST declares 20% profit. Which clause of 44 AB is applicable? A partnership firm of architects having turnover of rupees 45 lakh excluding GST declares 20% profit. Which clause of 44 AB is applicable? कौन सा करेंगे? 44 AB B चूज करेंगे, 44 AB D चूज करेंगे. Naveen is saying D. Any other answer? Which clause we will choose? So it will depend upon the accounting practice of your client, Naveen. If as per the accounting practice, they are including GST in their total turnover, then they will get hit by 44 ABB. But if they are not including GST in their turnover and they have the separate account जिसमें वो credit or debit करते हैं, then they will be hit by 44 ABD. Absolutely, Anshu and Nitesh, your answers are correct. Now, let's say if the SSC has opted for a taxation under section 115 BA, BAA, BAB, BAC, BAD, तो आपसे clause 8A पूछता है whether the SSC has opted for taxation under section 115 BA, BBA, BA, BAB, BAC, BAD. So these are those special sections जहाँ पे हम tax rate 15% कहते हैं या 22% कहते हैं. So first of all, these clauses are applicable on individual HUF companies and cooperative society. So let's say if your client is a partnership firm, then probably these sections are not applicable on them.
इनकी क्या ब्यूटी है कि इफ यू हैव ऑप्टेड वंस तो आप इसको कॉन्टिन्यूसली ऑप्ट करेंगे। तो आप लास्ट ईयर की आईटीआर देखिए कि लास्ट ईयर क्लाइंट ने इनमें से कोई सेक्शन ऑप्ट किया था या नहीं किया था। अगर लास्ट ईयर ऑप्ट किया था बहुत अच्छी बात है, वो इस साल भी ऑप्ट करेगा। फिर आप उससे चेक करिए कि उसने कोई फॉर्म 10IB, IC, ID, IE, IF डिपॉजिट कराया है या नहीं कराया। अगर उसने लास्ट ईयर ऑप्ट किया था और फॉर्म डिपॉजिट कराया है तो सर्टेनली आपका आंसर आपके सामने, यस इट इज एप्लीकेबल। अगर उसने लास्ट ईयर भी ऑप्ट नहीं करा और इस साल फॉर्म भी डिपॉजिट नहीं कराया, देन यू नीड टू टेक अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम देम and accordingly make the proper disclosure. If you are relying upon the management representation letter, तो जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं 3CA या 3CB, आप उसमें जरूर डिस्क्लोजर दें that for the purpose of clause 8A you have relied upon the management representation letter. Now the next is clause 9A. If a firm or association of person indicates name of partners, members and their profit sharing ratio, तो कुछ भी अगर आप किसी AOP या का कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हैं, तो जो भी उनके पार्टनर्स हैं, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको देनी है। अगर कोई भी चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर, वो भी हमें क्लॉज 9B में डिस्क्लोज करना है। क्लॉज 9B says if there is any change in the partners or members or in their profit sharing ratio since the last date of the preceding year, the particulars of such change should also be disclosed. Now this is, I feel, slightly more important from the correct information perspective. Clause 10A says nature of business or profession. If more than one business or profession is carried on during the previous year, nature of every business or profession must be given. तो जो भी आपका क्लाइंट कर रहा है वो आप उसके 10 बिजनेसेस हैं या 2 बिजनेसेस हैं, आपको सभी बिजनेस का या प्रोफेशन की जो भी नेचर है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपका एक क्लाइंट प्रोफेशनल भी है, डॉक्टर भी है और वो वास्तु भी करता है, तो देयर आर 2 सेपरेट लाइंस, दोनों का डिस्क्लोज करिए। या चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पता लगे एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, तो उनका भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। If there is any change in the nature of business or profession, the particular of such change should also be given. अब इस पे क्वेश्चन आता है, in regard of the nature of business, the principal line of such business is to be determined and stated in this clause, including the subsector pertaining to the sector selected. Information has to be furnished in respect of each business. अब मेरा क्वेश्चन आपसे जो ये है वो ये है, the assessee is a private limited company. एक है, मैंने हाइपोथेटिकल नेम सोचा, सुपर ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड फॉर लास्ट 5 years द कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स, दैट इज ब्रेकिंग सिस्टम फॉर 2-wheelers फॉर आफ्टर मार्केट with his own brand name Super Brakes. During financial year 21-22, 100% of the shares of the company were acquired by a car manufacturing company, Honda. And accordingly, to satisfy internal demand of group, Super Brakes was converted into captive manufacturing unit, and from 1st October 21 onwards, the SSC has manufactured auto parts only for the group companies Honda. तो क्वेश्चन सिंपल है, वो पहले भी ब्रेक्स बना रहे थे, आज भी ब्रेक्स बना रहे हैं। पहले वो आफ्टर मार्केट के लिए बनाते थे, मतलब वो अपना ब्रांड लगाते थे सुपर ब्रेक्स और मार्केट में सेल करते थे। तो जो शॉप्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, होलसेलर हैं, वहां पे आपको सुपर ब्रेक्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बट मर्जर एक्विजिशंस हुए और एक कार कंपनी ने या मान लीजिए स्कूटर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उस सुपर ब्रेक्स को एक्वायर कर लिया। अब वो सुपर ब्रेक्स को कहते हैं कि यार एक्वायर करा, शेयर एक्वायर कर लिए, तो नाउ द होंडी विच इज द नेम वी हैव गिवन, नाउ होंडी बिकम्स द 100% होल्डिंग कंपनी ऑफ सुपर ब्रेक्स। अब होंडी की अपनी इंटरनल डिमांड बहुत है, तो होंडी से सुपर ब्रेक को यार अब तुझे मेरे लिए बना, अब वो उसी के लिए मान लीजिए कार के भी ब्रेक्स बना रही है, स्कूटर के भी ब्रेक्स बना रही है, जो भी इंटरनल डिमांड है वो पूरा कर रही है। तो क्वेश्चन कम्स वेदर देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन दैट यू नीड टू रिपोर्ट। व्हाट इज द व्यू ऑफ द ऑडियंस, वेदर वी नीड टू रिपोर्ट दिस चेंज और नॉट? Whether we need to report this change or not? The answer is
this is a change and we must report this in our tax audit. Thank you Manish ji, बिल्कुल correct आंसर आपका. The assessee, next question, the assessee is into tailoring profession with a gross receipt of 75 lakh. With an advent of technology and online sales option, the assessee launched its own online brand, Clubber, especially for the age group of 15 to 25 years. अभी तक वो टेलर था, ठीक है, वो टेलरिंग करके 75 लाख रुपए निकाल लेते थे. अब उन्होंने अपना ही ब्रांड लॉन्च कर दिया क्लबर, और वो जो ऑनलाइन सेल्स पोर्टल है वहां पे वो सेल करते हैं. So whether you need to report this change or not in the 10B, the answer is yes, we need to report this change in clause 10B. There are different changes which are given as per ICA guidance code, which needs to be reported. Manufacturing to trading hai, change in principal line of business, manufacturing on commodities to manufacture goods on job basis, addition of new line of business, hiving of any business line. However, if there is any temporary suspension of any business line, the same should not be reported. Any queries till now? Now the another clause comes, books of accounts पे clause 11A. Whether books of accounts are prescribed under section 44A. If yes, list of books so prescribed. अब companies के case में कौन सी books prescribed है? Yeah, let's say your assessee is into trading of laptops. Can somebody suggest me what are the books prescribed for trader? Can you please type on a chat box, what are the books prescribed in income tax for the trader? YouTube पे जो watch कर रहे हैं discussion के अंदर please suggest कि कौन सी books किसी trader या manufacturer या किसी business के लिए suggested है. Can you please share your view, audience? देखिए आप सबको पता है मैं तो tax में नया हूँ, you know I'm from a TP and international tax background, so I want to understand कौन सी books prescribed है. If you can guide me. लगता है सब सोच रहे हैं कि आंसर बार बार गलत हो जाता है. सो एक्सेप्ट फॉर नोटिफाइड प्रोफेशन, बुक्स किसी और के लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और के लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. बट यस, क्लॉज 11B और क्लॉज 11C में आप देखेंगे कि एसएससी ने कौन सी बुक्स मेंटेन करी है. जो बुक्स मेंटेन करी हैं उसमें से आपने कौन सी ऑडिट करी हैं वो हमें चेक करना है और हमें उसी हिसाब से रिपोर्ट करना है. सो इफ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ any SSC other than the specified profession, then the answer to clause 11A would be no books prescribed. For 11B and 11C, 11B के लिए आप उनसे ले सकते हैं उन्होंने कौन सी बुक्स मेंटेन करी इन अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, कि कौन सी बुक्स मेंटेन करी है, वो कहाँ पे मेंटेन है, वो डेटा ले लीजिए. कई बार बल्कि आजकल तो बुक्स क्लाउड पे भी मेंटेन होती हैं, सर्वर पे भी होती हैं, सिस्टम पे भी होती हैं. और सेक्शन 212A में अमेंडमेंट आ गई, एंड दे हैव वेरी क्लियरली सेड दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स ledgers, day book, cash book, account book, and other books, whether kept in the written form or in electronic form or in digital form as printouts of data stored in such electronic form or in digital form or in floppy disk, tape or any other form of electromagnetic storage device. तो अब आप ऑनलाइन भी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो सेक्शन 212A के हिसाब से वो एकदम ठीक है. अगर आप क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हैं तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि क्लाउड का आईपी एड्रेस क्या है, सर्वर है तो सर्वर का एड्रेस क्या है. जहां पे बुक्स मेंटेन कर रखी हैं वो 11C में आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. नाउ वी आर ऑन एनी क्वेरी टिल नाउ. सो वी आर ऑन clause 12, whether the profit and loss includes any profit and gain accessible on presumptive basis. If yes, indicate the amount in the relevant section, that is 44AD, 44AE, 44AF.
भी जो भी है आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा। इसमें the important is if let's say the SSC has claimed if SSC is a specified professional and he is claiming 44 ADA, तो भी आप इसमें उसका residuary clause में disclosure देंगे, because 44 ADA is also a presumptive taxation. But auditor can see if regular books of accounts are prepared for both the businesses. मान लीजिए आपका client presumptive and non presumptive में है और आप डिस्क्लोजर तो दे ही रहे हैं, बट आपको एक्स्ट्रा क्या देखना है, अगर उसने प्रेजेंटिव और नॉन प्रेजेंटिव की बुक सेपरेटली मेंटेन कर रखी है, देन देयर वुड बी सर्टेन कॉमन एक्सपेंडिचर। उन कॉमन एक्सपेंडिचर का अपोर्शनमेंट कैसे हुआ है वो आपको देखना है। दैट इंस्टीट्यूट इज स्पेसिफिकली सेइंग इन द गाइडेंस नोट। अगर उसने maintain separate set of accounts for each such business and opt for getting the accounts of all such business audited under section 44AB, अगर वो सेपरेट सेट तो बना रहा है बट वो प्रिजम्पटिव की जगह वो कह रहा है मैं सभी को ऑडिट कराऊंगा, तो आपको सर्टेनली सारे डिस्क्लोजर्स चेक करने पड़ेंगे। देन क्लॉज सिचुएशन 3, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर नॉन प्रिजम्पटिव बिजनेस, हाउएवर नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाटसएवर इज मेंटेन्ड फॉर प्रिजम्पटिव बिजनेस, but the net income is credited to the main P&L account of the SSC. In such case, auditor should state that the amount of income as appearing in the profit and loss account with a suitable note expressing his inability to verify the said figure. Whether question आया, बड़ा interesting question है. Whether a firm providing accountancy services not being CAs can be notified profession, as the word used is accountancy and not accountants. This was discussed in a seminar I attended recently and no conclusive view was taken. Manish ji, आपका क्या view है? You can unmute yourself and share your view. Why? What is your view? Hello. हाँ जी Manish ji, please go ahead. My view, yes, because it word is used the accountancy and not the accountant. So and like somebody who are the other finance professional, if they provide those services, so type of services matters, not the like who is providing. Absolutely. तो मान लीजिए कोई दवाई देने लग जाता है और कोई बुखार चेक करने लग जाता है, and he started advising clients as the doctor's advice. So can we say he's a notified professional? No. You got the answer, Manish ji. Now coming to clause number 13A, method of accounting employed in the previous year. तो जो भी उन्होंने मेथड लगाया है वो आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे. Clause 13B, whether there had been any change in the method of accounting employed vis-a-vis method employed in the immediate preceding previous years. So as far as companies are concerned, we all know that they follow or they need to follow the accrual basis of accounting. कैश बेसिस आपके कुछ एसएससी फॉलो कर सकते हैं, बट प्राइमरली जो भी एक्रूअल, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आई हैव सीन दे आर फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस, स्पेशली कंपनीज एंड एलएलपी, दे डू नॉट हैव अ चॉइस, दे नीड टू फॉलो द एक्रूअल बेसिस. वो हमें लिखना है. क्लॉज 13B, वेदर देयर हैड बीन एनी चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो आप डिस्क्लोजर ले लीजिए, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लीजिए, अपना वैलिडेशन देखिए कि जो लास्ट ईयर था और जो करंट ईयर में है, स्पेशली दोज एसेसेस व्हिच आर नॉट कंपनी. मान लीजिए कोई इंडिविजुअल का बिजनेस आप चेक कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल के बिजनेस में ही में ऑप्ट फॉर कैश, ही में ऑप्ट फॉर accrual, तो वहां पे आपको प्रॉपरली वेरिफिकेशन करके करना पड़ेगा. एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, दे विल गोइंग टू फॉलो द accrual बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. And if there is a change in business, change in method of accounting, तो जो उससे impact आया है, whether the profit has increased or decreased, that you need to properly document and give in clause 13C. Clause 13D, whether any adjustment is required to be made to the profit and loss account for complying with the provision of income computation and disclosure standard notified under section 145(2). इसमें
To best of my mind, there are, two ICDS which are important. One is ICDS 2, which is on inventory valuation. उसमें वो clearly कहता है कि आपको inclusive method follow करना है. Inclusive method in the sense जो आपका जो tax component है, that should be added in the cost, and जब आपकी परचेज हुई तो हम उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे. तो जो हमारी परचेज, जो हमारी इन्वेंट्री बची हुई है, उसमें भी हम टैक्स को कॉस्ट, उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे. तो वहां पे एक मॉडिफिकेशन आता है. दूसरा जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, वहां पे वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से कहता है. सो देयर मे बी अ केस कि आपने बिलिंग कम की करी है, बट आपका परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू ज्यादा बुक होना है. तो वहां पे आई थिंक दीज आर टू ICDS which needs proper disclosure. तो आप इंस्टीट्यूट कहता है आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे. फॉर द पर्पस ऑफ replying clause D, the tax auditor should obtain a draft computation of total income and disclosure required under ICDS. Generally स्टॉक वाले को हम थोड़ा वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बिकॉज वी फील कि ना उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा. बिकॉज हम अगर गुड्स का कहते हैं GST की कॉस्ट को या टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे, इन बोथ द केसेस रिजल्ट वुड बी सेम. बट यस, वी हैव अनदर क्लॉज जहाँ पे क्लॉज आई थिंक 14 है, जहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. Clause 14, method of valuation of closing stock employed in the previous year. The method of valuation of closing stock is to be stated under this clause. जो भी है, raw material cost, net realizable value, whichever is lower, finished goods, work in progress, consumable stores, जो भी है आपके, तो net realizable या cost, whichever is lower, आपको करके दिखाना है. And that this you need to take in a management representation letter from the client. Clause B of 14, details of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A. So section 145A clearly talks about inclusive method of accounting. तो जो आपकी closing stock है, आप closing stock में आप देखिए कि हम जो normal books बनाते हैं, उस केस में हम we generally follow the exclusive method of accounting. We do not include GST or a tax component in the valuation of stock. But as far as section 145A is concerned, it is very clear that one needs to include cost, that is tax, GST, in the valuation of stock. तो जब आप 145A के लिए वैल्यूएशन करेंगे तो आप स्टॉक की वैल्यू में टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे. और क्योंकि आपने बुक्स में एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करा है, क्लॉज 14 भी आपको इंक्लूसिव मेथड फॉलो करने के लिए बोलता है, तो सर्टेनली आपकी क्लॉज 14B में रिपोर्टिंग आएगी. This clause is pretty simple. Clause 15 wants the auditor to verify or to give, the give word is actually for the assessee, because assessee needs to prepare form 3CD and we need to verify it. So clause 15 says, give the following particulars of the capital asset converted into stock in trade, description of capital asset, date of acquisition, cost of acquisition, amount at which the asset is converted into stock in trade. तो जब आप उसका कैपिटल एसेट का रजिस्टर चेक करेंगे या लेजर चेक करेंगे स्टॉक के, तो आपको पता लगेगा कि उसने कोई एसेट कन्वर्ट करा है. तो जिस दिन उसने कैपिटल एसेट कन्वर्ट करा है, वो डेट क्या थी, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, एंड अमाउंट एट विच द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये डालना है. कैपिटल गेन वगैरह की कंप्यूटेशन हमें नहीं देनी है, बट कैपिटल गेन तब होता है व्हेन वी सेल दैट एसेट एक्चुअली. देन अमाउंट्स नॉट, I think मेरी एक PPT sorry, amounts not credited to the profit and loss account. So the items falling within the scope of section 28, there are various provisions which are given in section 28. One important is TDS under section 194R. आप कहेंगे तो इस साल से एप्लीकेबल है, पिछले सालों में एप्लीकेबल नहीं था. बट व्हाट यू कैन सी, अगर आपके क्लाइंट का इस बार कोई TDS ऑलरेडी 194R में डिडक्ट हो चुका है एंड लास्ट ईयर भी उसको सेम नेचर की पेमेंट रिसीव हुई थी, बट उसमें 194R डिडक्ट नहीं हुआ. करेक्ट. इस साल आपका क्लाइंट को he has received some amount from the business, from the vendor or from the customer,
and the vendor or the customer has deducted the TDS. Let's say your client is distributor and there is a manufacturing company जिससे वो माल लेते हैं और आगे बेचते हैं, गुड्स लेते हैं और सेल करते हैं, और आपने देखा कि यार अगस्त में तो उसका 194 आवर में TDS कटा हुआ है, अगस्त 22 में. I think that is a good point to see whether the payment of similar nature your client has received in the previous years or not. If your client has received the payment of similar nature in the previous years, the question comes whether you should disclose it or not. So if, see, there is no change in section 28, the only thing which has been added is 194 hour, the TDS responsibility. तो TDS आज लग रहा है और वो इनकम है, तो आपको पिछले सालों में भी उसको एज अ इनकम ऑफर करना पड़ेगा. तो मेरा हम्बल व्यू यही है कि आप उसको क्लॉज 16 में जरूर डिस्क्लोज करें लास्ट ईयर की पेमेंट्स, वो सिमिलर नेचर की जिनमें इस बार आपका 194 आवर में TDS डिडक्ट हुआ है. एनी क्वेरी हियर? देन आपका कोई एस्केलेशन क्लॉज है या कोई एनी अदर इनकम है जो हमें रिपोर्ट करनी है क्लॉज C या D में, तो आप जरूर देखें कि क्या ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल कंसेप्ट्स फॉलो होते या नहीं होते. मान लो कोई मैंने एस्केलेशन क्लॉज सबमिट किया और वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ. अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो क्लॉज C अपने आप मना कर देता है. एक्सेप्ट हो गया बट उसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो मैं फुलफिल नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्या AS 9 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा. इफ द आंसर इज यस, देन यू शुड रिपोर्ट इट. Income which may be reported in D, employees contribution not deposited on or before due date, अगर कुछ है तो आप उसको clause D में disclose कर सकते हैं. Capital receipts, if there are so there are certain capital receipts which are given in section 28, तो आप उसको clause A में disclose करेंगे अगर they are not credited to the P&L. But if there are other capital receipts which are not credited to P&L, आप उसको clause 16E में दिखाएंगे. There are some examples. Capital subsidy received in the form of government grants, which are in the nature of promoters' contribution. They are given with the reference to the total investment of the undertaking. Compensation for surrendering certain rights, profit on sale of fixed assets, investment to the extent not credited to the P&L, receipts of non-refundable deposits, sale of carbon credits. So question clause 16 is not asking whether it is taxable or not. Clause 16 is simply asking if there is a capital received, whether you should disclose whether the same is credited to P&L or not. If not, you should put the data here so that department can verify कि ये revenue nature की है या ये revenue nature की नहीं है. Then we have clause 17, where any land or building or both is transferred during the previous year for a consideration less than value adopted. Now think of those your friends जिन्होंने F&O में ट्रेड करा एंड अच्छा ट्रेड कर लिया, अच्छा प्रॉफिट दे हैव अर्न्ड, दे आर अदरवाइज इनटू सैलरी, बट अब उन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया बिकॉज F&O की जो इनकम आएगी वो बिजनेस इनकम होगी. अब उन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया और उनकी टर्नओवर मान लेते हैं 1 करोड़ से ज्यादा थी. F&O में टर्नओवर इज द स्क्वायर ऑफ अमाउंट जो मैंने बाय करा और सेल किया, जो बैलेंस गैप बचा, दैट इज माई turnover for the purpose of F&O. Now if that the balance is more than 1 crore but less than 2 crore, then tax audit would become applicable. Either you will declare profit as per what is prescribed, that is 8% or 6%, but if you are disclosing profit less than the same, then tax audit is applicable. And if tax audit is applicable, your friend needs to give detail under clause 17, where it says where any land or building or both is transferred during the previous year for a consideration less than the value adopted. Whether perquisite received in cash are required to be disclosed under section 28, though we were not showing in earlier years. See, it may not be, Manish ji, income under 28(4), but it is certainly income under section 28. So आपकी income तो बनेगी, may not be under 28(4). Yeah, I was just in reference to that 194 hour change, that circular.
So based on see, circular is saying about TDS, but there is no amendment in 28.4. So to best of my mind, yes, it will get taxed as normal income. yes. Now we are moving on to clause number 20. Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profit or dividend. Whether bonus or commission paid to an employee is indeed share in profit or dividend. बड़ा common question. Generally हम disclose नहीं करते हैं, but अगर आपका कोई employee है जो आपका शेयर होल्डर भी है और उसको हमने कोई बोनस और कमीशन दिया जो हम उसको अदरवाइज एज ए प्रॉफिट या डिविडेंड देते हैं, हमें वो क्लॉज 20 में डिस्क्लोज करना है. तो आप क्या करेंगे, आप उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर लेंगे, आप उसका बोर्ड रेजोल्यूशन देखेंगे, एजीएम देखेंगे, कुछ ऐसा पास हुआ है कि इसको देना है. इफ it is not as per the employment letter or it is not as per the board resolution, then I think there is a problem. Secondly, when you have taken a decision, let's say आज मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं इनको जितनी भी सेल्स इफेक्ट करेंगे उसका 5% दूंगा. Now he will affect sales and then he will get the 5%. Then it is not, we will give him as a dividend or profits. But अगर मेरे profit already arise हो चुके हैं and then I'm taking a call कि यार now let's divide a certain profit to 50% to the shareholder as bonus, then we are in trouble because now it is a call afterwards taken after the profit as a reason, and department or the courts may not give answer in our favor. Details of contribution received from employees for various funds as referred to in section 36(1)(5)(a). अब तो जो भी, even if there is a 1-day delay, the whole payment will get disallowed. So we need to be very sure. There are different funds like employee state insurance, provident fund, labor welfare fund, superannuation fund, gratuity fund. जितने भी आपके फंड्स हैं आप वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लीजिए और उनमें चेक करिए कि नेचर ऑफ फंड क्या था, एम्प्लॉय से कितना सम आया, ड्यू डेट क्या थी, एक्चुअल अमाउंट पेड क्या है, and what is the actual date of payment to the concerned authorities that you need to verify from all the documents given to you. Now we have Brijesh ji saying there has been a change in the definition of turnover for F&O. Please check. Sir, I think Institute says delivery and non-delivery base. So wherein it is delivery base, if delivery is happening, तो जो भी final value हम वो ले लेंगे. But where the delivery is not happening and square off is happening, वहां पे आप जो gap है, जो square off आप कर रहे हो, वो amount we will consider as turnover. So any query, I think I am done with today's discussion. If you have any query on the clauses that we have discussed or covered, feel free to share your queries. And rest we will be taking up on the next Sunday. So any queries for my friends watching me on YouTube? Okay, Brijesh ji, please send me that recent amendment, and if needed, we will cover the same in the next session. Any other view or thought? Thank you, friends.